Hey, so let's look at what happened in the morning. Did not really have a view on Friday for the open today, so and it did cap up. Uh, I am expecting downward moves now for Wednesday, Thursday, Friday with some up moves, but let's see. That is the reason I have not taken a future trade here. I have taken a Hero Zero options trade. So either I will look at how this week ends and then decide what to do. But for now, I'm still looking for at least 17,450 break in Nifty 50. So what happened intraday? Uh, let's look at the pattern. So Bank Nifty was trading above the blue box in the morning, and we did see some volumes in the morning, which was the volume initiator low was broken uh, by I think 11 o'clock, and when it broke, it gave you a good volume down move. So you don't really chase it. I mentioned this several times. You don't really chase the down move. You wait for a consolidation, which is what happened. And if you waited for a consolidation, though it was a huge consolidation, you could have easily done 150 points intraday. So the logic again is follow the volumes, uh, up move, and down volumes came and broke this box, and this box was formed. When this is usually formed, you take a, if you've been following my post market, this is basically how I've been explaining all these volume moves. Wait for consolidation and you take the trade. Okay, coming to the idea, uh, let's look at what I mentioned in my video, which is usually posted on my channel. I was expecting a down move below 1 o'clock. 1 o'clock low, sell, stop loss 1 o'clock high, gave a 1:2 trade. So this high was basically 836, 811 when broke, almost gave 661. Did not meet my target though. My target was just candle break. But yeah, almost 1:2. A good trade. So two good trades today. Nifty, there were no volumes today. So pretty even, there were no up volumes, no down volumes. Bank Nifty did see a down volume at the end. So good day, not a bad day. And what am I expecting on Wednesday? Tomorrow is holiday. Wednesday, I'm expecting a gap down. Let's see. Nifty. How will I trade? I will wait for, you know, I think if it gap downs on Wednesday, I will wait for it to come back up and then probably look for a selling opportunity. This probably, even break high when it comes up, day high. But let's see how it opens. बैंक ने पहले देखते हैं कि मैंने क्या बोला था फ्राइडे को. मैं बेसिकली कोई व्यू नहीं था मेरे पास ओपन का, और मैंने लिखा भी है अपने इसमें एनालिसिस में, या बोला भी अपने एनालिसिस में कि मैं यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट हूँ. तो इसलिए मैंने ऑप्शंस लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ऐसा कुछ मूव्स बनाएगा तो भी मेरे को पता है मेरा लॉस कितना है. अगर इसलिए मैंने हीरो ज़ीरो भी बोला है उसको, तो मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है उसमें, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है. बाकी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में तो आज कोई वॉल्यूम्स था नहीं बिल्कुल भी. बैंक निफ्टी में आते हैं. बैंक निफ्टी में ओपन ये कल फ्राइडे के बॉक्स के ऊपर हुआ है, क्लोज फर्स्ट कैंडल, और फिर उसने वॉल्यूम कैंडल आया था, और उस वॉल्यूम कैंडल का लो, जिस कैंडल ने इनिशिएट किया था ये आप वॉल्यूम, उसका लो टूटा. तो अगर आप मेरे पोस्ट मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो ये तो एक सिंपल टेक्निक है. जब भी लो टूटता है गुड वॉल्यूम्स के साथ, तो आप कंसोलिडेशन का वेट करिए, स्टॉप लॉस रखिए इसको और सेल कर दीजिए. 150 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं इसमें. और उसके बाद मैंने एक ट्रेड दिया था इंट्राडे, अपने चैनल पे पोस्ट किया था अराउंड 1 o'clock, कि 1 o'clock के नीचे बेचो. टारगेट मैंने ज़्यादा दिया था, लेकिन ये 1:2 मिला इसमें मुझे, तो ये भी डिसेंट था. और इसमें निफ्टी में कोई वॉल्यूम्स नहीं है, इसलिए मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं. तो मेरे को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं होते. तो बैंक निफ्टी इसलिए पसंद था, निफ्टी सिस्टम ट्रेड आया था, ये मेरा रेफरेंस था, इसलिए मैंने ये दिया था ट्रेड 1 o'clock के नीचे. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये अच्छा खासा गिरे, पर ये नहीं गिरा, पर तब भी 1:2 देके गया. और अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गैप डाउन. पर मैं क्या करूँगा अगर गैप डाउन हुआ तो मैं बेसिकली शॉर्ट नहीं करूँगा गैप डाउन पे. मैं उसको ऊपर आने दूंगा, और एक बार ऊपर आया तो क्या पता वो डे हाई भी तोड़ दे, और ऊपर आया तब मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करूँगा.
और मेरे ख्याल से अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप अप का मुझे पता नहीं है, मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ वेडनेसडे। अगर होता है तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा, अपने सिस्टम्स के हिसाब से या वॉल्यूम्स के हिसाब से। कोई प्लान नहीं है गैप अप के लिए। थैंक यू।